Ladies and gentlemen, the Delhi police claims there is a foreign funding angle that must be investigated in the case of Mohammed Zubair. किसी ने पूछा कि मुझे हमें पता चला कि आपको सोरोस से फंडिंग आती है। मैंने कहा आप ये ट्विटर इस पे देखें ये सब, तो ही एक्चुअली स्माइल्ड। हाँ नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा था। My question is, why is an Indian fact checker getting any donations with any links to Pakistan, UAE, Syria and others? सबसे पहले सवाल पुलिस स्टेशन में, where have you all been? मतलब have you been to दुबई, सऊदी, मतलब ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी मतलब कंट्रीज हैं वहाँ पे, मतलब व्हेन दे सॉ आई हैव बीन टू जापान, आई हैव बीन टू साउथ अफ्रीका, आई हैव बीन टू मतलब यूरोपियन कंट्रीज, बट यहाँ सब गया है और यहाँ पे गया ही नहीं, मतलब दे वर एक्चुअली शॉक। तो उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि कौन कौन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे नाम गिनवाया। आई न्यू के मतलब वे दे आर कमिंग टू, मतलब दे वर एक्चुअली शॉक, मतलब 2 ही मुस्लिम है, मतलब इंक्लूडिंग यू 3 मुस्लिम हो ही नहीं सकता यार, मतलब पूरा तुम्हारा पूरा लोग बोलते हैं कि मतलब पूरा मतलब कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट डालते हो। मैंने कहा एंटी गवर्नमेंट कहाँ है, जो भी फैक्ट चेक है आप देखिए, मतलब फैक्ट चेक एंटी गवर्नमेंट या फैक्ट एंटी गवर्नमेंट है। फैक्ट चेकिंग फॉर दिस गवर्नमेंट इसके जाके देखो किधर कोई फैक्ट नहीं बोल रहा। Hey, shut up ya Kunal. Shut up ya Kunal. Shut up ya Kunal. Hey, shut up ya Kunal. Ya Kunal. Hello ladies and gentlemen, welcome to another episode of Shut Up Ya Kunal. Today with me are 2 engineers, Pratik, Sinha and Mohammed Zubair with me today. And we're going to discuss how to keep Zubair out of jail for as long as possible. मैं भारत की जनता को कह रहा हूँ, मेरे जान को खतरा है, ये मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। First question I want to ask you is like, how did alt news start? What was the motivation for it to start? Both of us were very active on social media. I was running a page called Truth of Gujarat and assisting my parents write a few articles. We wrote multiple articles about fake encounters in Gujarat, Gujarat riots, etc. So Zubair was also... I was also very active on social media, especially on Facebook. And in 2012-13, during the protest, Nirbhaya protest, and also during Andha Andolan, we were, as youngsters, we were all very active. Soon after 2014, once Mr. Prime Minister Modi was elected, I started a page. I mean, it was just for fun. It was called Subramaniam Swamy, named it as Susu Swamy. Susu Swamy, probably somebody having diabetes, I think. So it was a parody page. I also followed Mr. Subramaniam Swamy on Twitter from my anonymous account. And I mean, I thought he was actually funny when he was actually serious, but then for people like us, it looked very funny. For example, linking Tejo Mahalaya to how it was like Tejo Mahala before, and then how the Mughals converted into, made it look like as if it is built by them. उसी तरह का मैं satire लिखता था. Actually, इसमें problem हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था कि parody कौन है. When you can't really make out the difference between what's the joke and what's the real person, I mean, that's a really, really well done joke then in those cases. So the parody page, just FYI, said that, you know, Charles Darwin was Indian and Malala Yousafzai was Indian and Mona Lisa was Indian and everybody was Indian, and, you know, it's a standard line of reasoning that you find from many people saying India invented everything, India discovered everything. हाँ, तो माइकल जैक्सन का बोला कि he is from Chennai, and then how his name was actually Michael Al Jaikishan. So that is when people started following me on Facebook. My friends would always say, like, a guy who did not know who the CM of Karnataka in 2011-12, or maybe did not know anything about politics, is like now activist, or I would say journalist. You all met, I think, 2014. नहीं, actually 2016 में ये हुआ कि मतलब I shared one of his posts. I didn't know it was his. पहले हुआ था ना 16 I think 15 शायद 15 में ऐसा कुछ था. And I shared one of his poster without giving him credits. मुझे पता नहीं था इनका था. He reached out to me, मैसेज किया, यार तुमने शेयर किया है, मुझे ट्रूथ ऑफ गुजरात को क्रेडिट नहीं दिया. ट्रूथ ऑफ गुजरात का मैं एक पट्टी डालता नीचे. किसी ने मुझे पट्टी काटा हुआ इसके पेज में मिला था कि कट कैसे किया. हाँ, तो कट, हाँ, किसी ने भेजा था. एंड दैट इज व्हेन वी स्टार्टेड इंटरेक्टिंग. तो हम इंटरेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई वाज आल्सो वर्किंग इन नोकिया उस टाइम पे. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. मतलब उसमें अहमदाबाद भी जाना हुआ. एंड जब पता चला प्रतीक को कि आई मीन अहमदाबाद, ही कॉल्ड मी टू हिज हाउस. I remember standing outside the hotel and discussing कि देखो ये सब हम लोग तो कर रहे हैं, why not do it in an organized manner. Then I think mid of September 2016 I wrote a concept note, and that was the same time when I quit my job. I was working as a software engineer for a US based company. तो तब मैंने quit किया, and then February 2017 we started Alt News. तभी 2016-17 में काफ़ी लोगों ने
ये मूव लिया था, बिकॉज आई थिंक 3 साल हो गए थे इनके, और लग रहा था कि अभी लड़ाई लंबी है तो सब लोग अपना जॉब छोड़ो. मैंने भी जॉब तभी छोड़ा अच्छा. था. What were you doing there? I was in advertising. 10-11 साल अच्छा. मस्त था मैं. 2017 I took a sabbatical. 18 I resigned. Right, right. मैं तो हिम्मत भी नहीं कर पाया. प्रतीक was like तुम जॉब छोड़ दो और मे बी फुल टाइम यहाँ पे आ जाओ. मैं like घर पे बोल भी नहीं सकता. अच्छा खासा जॉब था, आई वॉज मैरिड, किड. तो बहुत कन्विंस करने में मुझे लगभग 1 साल लग गया घर वालों को. मैं खुद तो मैं 5 साल से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉडकास्ट पे आ जाओ. टाइम तो लेते हो तुम. वो तो है, हाँ. वो तो कंप्लेन हाँ है सबका. बोलो. तो 2018 में आई थिंक तब IPSMF reached out to us. They What is reached out. IPFMS for? IPS, Independent Public Spirited Media Foundation. So they are a Bangalore-based trust where many people have put in money, which becomes a corpus money, and then there's a board of trustees who decide who this money should go to and who not to go to. We have to apply. So they have a very prominent role in actually we being successful, because we were a very new organization. Both of us were engineers. My mother, who's the managing director of the company, she comes from a science background. So no one was from a journalistic background. And that is when IPSMF reached out to us saying that, hey, you guys are doing good work and we would like to, we have a grant which supports independent media. It's a 3-year grant, but eventually we got money much later. So Feb 2017 we started. Then it was just me as a full-time person, and I had no salary till November 2017. Then we did a crowdfunding campaign, and end of November is when I got my first salary. December 1st was when we had the first person besides me. And then the IPSMF money, I think, came sometime in 2018 because they needed certain certifications for the company. And when we got those, then that is when the IPSMF grant came in. And that's when I joined. और अच्छी बात यह है कि भले देश में लोकपाल नहीं आया, लेकिन न्यूज के लोकपाल तो हैं ये. आप जब ऑल्ट न्यूज चलाते हैं तो फेक न्यूज वाले तो कमा रहे हैं, तो बात पता चली आपसे. आप कमा पाते हैं कि नहीं? आपका कोई बिजनेस मॉडल है कि नहीं? What is the cost of being independent, non-profit, and advertising free? Like you all don't run any ads. So what is the cost of it? The business model is donation based. And why did we choose a donation based business model? Because the other alternative is subscription based. If you want to be independent, then there are these two models. Now, our belief was that the content that we are producing is in public interest. So our license is also copyleft license. We have a CCSA license that anyone can use our content. All we need is attribution, and nothing should be behind a paywall. Nothing should be limited. We will ask for donations, and those who can afford to pay will pay. Those who can't afford to donate will not donate. But it is accessible to all. Content from alt news or many other fact checkers is being used by people on YouTube to debunk misinformation. भले ही हमारी reach कम हो, but the content from us is being used, say, by many others, like on YouTube. But what I'm saying is that this has a scalability issue, because what if you want to do the same work you do in 17 other languages? See, there are two parts to it. Number one, where did this model come from? It is not that this is an original idea. Guardian, at one point of time, which is a huge organization, was facing a huge cash crunch. And now if you go to Guardian's front page, on the top left, where usually, which is the most priced area, they have a donation widget. They don't have their own icon. Their own icon is on the top right of the website. And after every article, there is a huge saying ki aap donate karo. A website like Guardian, they completely reversed their fortunes since the time they went into not a subscription but a donor model. So, and when it comes to languages, what is, for example, to support one language, let's say if you want to support Ahomia tomorrow, you need 2 writers and 1 editors. How much money would we need? About 1.5 lakhs a month for one language. So then if we say 500 into 300, so we need 300 subscribers giving us 500 rupees each from the whole state of Assam. That is a very achievable number. Yeah, but I'm saying every time you want to do something, you have to do this maths and achieve it and execute it. Yes, but what does it bring in return?
there we are able to write about anything and everything. What the other fact checking websites, the business model that they followed was that they became Facebook partners, and that is where they get their money from. But that also means that they find it very difficult to criticize anything that the platforms do. And I believe that the platforms are equally responsible as much as the people who are putting out disinformation for what is the state of social media. So, like, the Myanmar exodus happened because the Myanmar army, they created all these pages on Facebook which put out hate against Rohingyas, and it actually led to an exodus. Why did? Because Facebook did not care to take down these pages. Facebook has been accused by human rights activists of falling short of stopping hate messages spread on the platform in the country. Recently, UN investigators blamed Facebook for playing a role in inciting possible genocide in Myanmar, and there has been genocide there. For example, Facebook does not have language models for India. Only for a few languages do they have proper language models. So when you're putting out hate, there have to be language models which have to understand the context, the nuance, and figure out whether it is hate speech or not. So the problem is that it is not just understaffed. They are okay not putting in money into their operations in India because they know that the government doesn't care. The government doesn't care that hate speech is there because it actually is benefiting them. The most common form of misinformation is old videos and old images going viral. That is about 50% of the misinformation that we see. At one point of time, I would say that it was about 70, 80, maybe it has come down slightly. Now, how do we find out? Typically we find evidence on the same platform कि Facebook में ये 2022 में already post हुआ था. That is our fact check कि ये 2024 का नहीं है, ये Facebook में ही 2022 पे post हुआ था. आप कोई भी न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट जाओ, 6 साल पुराना आर्टिकल खोलो, उधर ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये 6 साल पुराना आर्टिकल है. क्यों लिख रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया? Because they know that people are resharing old articles, not knowing that these are old articles. This is the problem. When others are recognizing it, why are social media platforms not recognizing it? It's just a matter of building a tool. Which means that there isn't a willingness to deal with this issue. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. ट्विटर का तो है ही नहीं ना, मतलब दे मॉडरेशन तो बिल्कुल नहीं है. कुछ भी मतलब ऐसे वायलेंट कंटेंट है, यू विद इन ए डे और टू मतलब आप देखेंगे कि इसका 5 मिलियन 10 मिलियन व्यूज़ हैं. मतलब इतना इट्स ब्लेटेंट, मतलब यू स्टिल हैव कम्युनिटी नोट्स अंडर, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी इतना ज़्यादा फैलता है बिकॉज द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज एम्पलीफाइंग सच कंटेंट. मतलब इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा ये है कि देखिए मतलब फूड हाइजीन स्पेशली फूड हाइजीन टू डिमीन पीपल फ्रॉम इंडिया, तो इतना ज़्यादा वायरल हो रहा था. मतलब वो मॉडरेशन बिल्कुल ही नहीं था. इसलिए पहले तो दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फूड हाइजीन, देन पीपल स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट इंडियंस, कैसे हाँ रेसिस्ट प्लस वो बहुत ज़्यादा होने लगा. एंड देन कुछ भी मॉडरेशन नहीं, मतलब दे इज नॉट वन ट्वीट आई वुड से कि दे मतलब टेकन इट डाउन. They have so much fact check content because they have fact checking partners. They also know who all have repeatedly put out disinformation. How come their accounts are still active? Because you know that these are repeat offenders, and the way you make platforms better is by taking down repeat offenders. 3 strike, 5 strike, 10 strike. Madhukeshwar के case में 100 strike. So then when this platforms which are deliberately causing harm to the society, they give money and say, hey, go fact check, then I think it's a very problematic model because they are part of the problem. In fact, I remember asking him maybe क्योंकि बहुत सारे fact checkers were aligned with Facebook to get the money. I actually insisted him क्योंकि मतलब मतलब हमारा भी कुछ 10 lakhs वैसा कुछ मंथली हो रहा था, तो ऐसा why not partner with Facebook. उसमें 2 चीज़ें होंगी, एक तो रीच वो शायद बढ़ा देगा, दिस इज़ व्हाट आई अज्यूम, वो रीच तो बढ़ जाएगा, मतलब जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है उसको फ्लैग कर देता है, तो विच इज़ एक्चुअली हेल्पफुल. वी हैड अ डिस्कशन मल्टीपल टाइम्स. आई वाज लाइक नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब वो ऐसा अगर कोई कभी आया कि मतलब वी शुड नॉट, इफ दे स्टॉप अस इन कॉलिंग देम आउट, तब वो बात डिसाइड करेंगे, तब तक तो हम करेंगे. देन वी हैड अ डिस्कशन, ही वाज लाइक नहीं. It is a decision that Odd News took that we will never take any money from any platforms because that is, that there's a clear conflict of interest there.
सरकार की तरफ से जो ये फेक न्यूज आपने कई रिपोर्ट्स पकड़ी गई हैं, होम मिनिस्ट्री ने भी हटाया था। आपने जब होम मिनिस्ट्री ने अपने एनुअल रिपोर्ट में एक फोटो डाला था कि ये इंडियन बॉर्डर लाइटिंग का फोटो है, वो एक्चुअली स्पेन मोरक्को का फोटो था, स्पेन मोरक्को बॉर्डर का फोटो था। निर्मला सीतारामन जी एक कोई तो AR रहमान का पोस्टर जा रहा था कि कुछ बीफ के बारे में उनका कमेंट था जो बिल्कुल फेक था, वो निर्मला जी ने भी रीट्वीट किया था। बाद में उनको बताया गया कि ये फेक है और उन्होंने पब्लिकली अपोलोजाइज किया। तब थोड़ी शर्म भी थी लोगों में, हाँ, मतलब सब जगह थोड़ी शर्म थी जब हम लोग शुरू किया। सो देन न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस वुड टेक डाउन देयर स्टोरी एंड दे वुड एटलीस्ट गिव आउट अ क्लैरिफिकेशन सेइंग कि ठीक है, गलती हो गई। हाँ, तो हाँ, appreciation भी मिलता of course था। then that vanished. But when was the first time you guys realized that you all are doing something which is saving lives or of some significance? Because एक बार वो feeling आता है ना कि यार, oh this is job well done. जब भी मेरे को कभी, I mean it's a silly thing to compare, but my workplace when I crack a great joke which none of the audience could see coming, I'm like okay that's great, well done. But that's my job. But your job is much more serious and active. एक पुलिस IPS ऑर्गेनाइजेशन का कुछ वेबसाइट था wherein some पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ने एक मैनुअल निकाला था जहां बताता था what references to see, तो उसमें ऑल्ट न्यूज का नाम था, 2 बार था इसमें। तो राइट विंग ने इतना आउटरीच किया कि वो मैनुअल ही निकाल दिया पुलिस वालों, या इंटरनल मैनुअल था ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए। उसमें ये था कि मतलब अगर आपको फैक्ट चेक करना है, रिलाई करना है किस पे, तो मतलब एक तो बूम लाइव का था और ऑल्ट न्यूज का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मतलब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए पुलिस वालों को, यू कैन ऑल्सो रिलाई ऑन ऑल्ट न्यूज। उसमें ने ऑल्ट न्यूज का नाम डाल दिया, जो कि 100% इवन एन इडियट नोज इट इज फंडेड बाय इस्लामिक टेरर मनी एंड कांग्रेस इज बिहाइंड इट। ये जब रूमर्स चल रहे थे चाइल्ड किडनैपिंग के, तो महाराष्ट्र से एक पुलिस पर्सन हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग दिस, उन्होंने फोन करके बोला था कि आप लोग तो हमारा काम कर रहे हो। तो ऐसा भी हुआ है काफी बार की। ये तो मतलब व्हेन आई वाज अरेस्टेड, एक मतलब सीनियर पुलिस ऑफिशियल यूपी के खुद ने बोला ये बात। उनको इन्वेस्टिगेशन करना था, सवाल जवाब पूछना था, उसमें ये भी बोला था कि आई बीन फॉलोइंग ए पेज, मतलब बहुत सैटिरिकल था, एंड देन लेटर ऑन आई हैव आल्सो बीन फॉलोइंग योर फैक्ट चेक्स व्हिच वाज लाइक वेरी गुड, बट क्या करना है, ये हमारा काम है, करना है ये। सरकार जो फैक्ट चेक यूनिट बनाना चाह रही थी, सरकार के मुताबिक उसका मकसद था कि जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई फर्जी खबरें हैं, फेक न्यूज़ है या गलत जानकारियां हैं, उससे वो निपटने के लिए एक फैक्ट चेक यूनिट बनाना चाह रहे थे। तो आपका फेयर ये था कि अगर ये फैक्ट चेक यूनिट बनता है तो आपकी कॉमेडी या आपकी सटायर पे उसका असर पड़ेगा। कोई भी चीज पे इसका असर पड़ सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट बोल रही है कि वही एक फाइनल डेस्टिनेशन है फैक्ट चेकिंग के लिए। That is the whole problem with this PIB fact check. That for example when migrant workers की ट्रेन्स जब जा रही थी और 4-5 लोग मर गए ट्रेन्स में, तो सिंपली बोल दिया कि they had previously, पहले से उन लोगों को बीमारी थी। We got in touch with 4 families and we've written articles कि the family said that no, there were no previous instance, कि वो लोग पहले से बीमार नहीं थे, ये ट्रेन में मरे हैं। But some newspaper wrote this article, immediately PIB fact check said wrong, cross कि ये लोग पहले से इन लोग की बीमारी थी, and that would have taken 1 minute to just do that cross कि पहले से बीमारी थी। We actually had to get people, and these were people living in villages. We had to get people to go to those villages, get their statements on video, and then we could publish an article. कोई अपने आप को स्वघोषित फैक्ट चेकर बता दे, उससे वो फैक्ट चेकर नहीं हो जाता। काफी चीज तो गवर्नमेंट डेटा लेता ही नहीं है, तो उस केस में क्या, फार्मर सुसाइड्स का तो आई डोंट थिंक डेटा लेते हैं अभी। सो where do you think the landscape of fact checking is going to go towards? I know, for example, an activist sort of friend who's गुजरात से, उन्होंने ये फार्मर सुसाइड का एक्सपोज किया था, तो they stopped recording farmer suicide. So then what he did was that he did RTI कि किस को वो फार्मर इंश्योरेंस मिला है, वो डेथ पे अगर सुसाइड होता है तो एक इंश्योरेंस मिलता है, तो उन्होंने उसका RTI किया। सो देन ही एडेड ऑल ऑफ दैट एंड दैट इज हाउ वी केम अप विद द कि गुजरात में कितने फार्मर सुसाइड हुए, उनका नाम है भरत झाला। तो so there are means and ways in which RTI activists are trying to find out data where, ठीक है, आपका पब्लिक डोमेन में आप सीधा सवाल पूछोगे तो वो डेटा नहीं है, बट थ्रू अदर वेज दे आर एबल टू फाइंड डेटा। वी आल्सो हैव दिस व्हाट्सएप नंबर वेयर इन पीपल कैन सेंड अस, मतलब जो भी वायरल कंटेंट है वो हमें भेजते हैं,
तो एंड मतलब वही हम कीवर्ड मान लीजिए आपने मुझे भेजा व्हाट्सएप पे, देखिए ये चल रहा है विद दिस टेक्स्ट, what we do is we copy the text and also search on multiple other platform to Facebook पे, Twitter पे. If it is actually viral, then we say then we have a discussion, then decide कि maybe we should take this up. I mean initial थोड़ा में हम research करते हैं कि if it is right or wrong, हमें लगता है कि initial के नहीं ये misinformation है, then we have a meeting, मतलब हर दिन meeting होती है around 11 o'clock. So then make a decision कि ठीक है इस पे लिखना है, इतना ज़्यादा content viral है. That is when we decide कि process ये ऐसे start होता है कि we should write or not. We also see who's posting it. If it is viral, the way we determine priorities कि कौन कर रहा है, is it someone prominent posting it, whether it is viral. एक तो virality के ऊपर जाता है, and if it is viral and not मतलब it is not that viral and also shared by someone prominent from any political party, तो then even वहाँ पे decide करते हैं. Even if it is not viral, we'll have to debunk it. हाँ, so I just wanted to ask you, what's your exact process of fact checking something that you find on the internet? For example, my colleagues have been going to RG Court every day, trying to speak to people, trying to build that trust. Ki yeah, it is okay to talk to us. So, for example, just yesterday there are 5 names which are viral on social media, claiming that these are they are also culprits. So yesterday we did a story on one person named Arshan Alam. So in that case, we through people, we spoke with multiple people. Eventually someone gave a number, then we spoke with him for over 4-5 days. We spoke with him, then we told him कि यार तुम्हारे घर के आसपास कोई CCTV है. तो फाइनली उसने हम लोग को वो CCTV फुटेज दिखाया. हम लोगों ने बैठ के 6 घंटे का CCTV फुटेज देखा. वो घर पे आता है 1:16 बजे. ये द क्राइम हैपन्स एट between 4 and 4:30, और हम लोगों ने CCTV फुटेज 5 बजे तक का देखा कि वो 1 से 5 अपने घर से बाहर नहीं निकलता है. और हम लोगों ने वो फिर घर का लोकेशन देखा कि और कोई सेकंड गेट है या नहीं. पीछे एक शटर था. हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड से बात किया कि ये शटर से निकल सकते हैं, नहीं निकले. 1 साल से ये शटर खुला ही नहीं है, कि ये शटर डैमेज है तो 1 साल से खुला ही नहीं है. पीछे उसके 2 ऐसे रैग्स पड़े हुए थे इंडिकेटिंग दैट दिस शटर हैज़ नॉट बीन यूज्ड. दिस वुड बी investigative journalism from a traditional point of view, except that traditional journalists will not be interested in Arshan Alam. कि उन लोगों को नहीं फर्क पड़ता है कि आर्शन आलम के खिलाफ कोई false allegation है या नहीं. उन लोगों को नहीं फर्क पड़ता है. We were informed by Time magazine, no less, that 2 Indians, Mohd Zubair and Pratik Sinha, self-styled fact-checkers, were favorites to win the prestigious prize. Remember that word, favorites. These people are favorites. Favorites. Favorites, forget nominees, favorites. Favorites. You would imagine everyone's naming them. And we hate to break this to you, they were never favorites. Shortlist says, other worthy candidates for prize focused on combating religious extremism and intolerance in India are Mohd Zubair and Pratik Sinha. Does that sound like a favorite to you? मजाक करते हैं. इन्होंने मजाक बना के रखा है खबरों का, न्यूज़ चैनलों का. इन चैनलों का बहिष्कार कीजिए. एक एपिसोड बीच में जो तुम्हारे साथ हुआ था, when you were discussed on mainline news for a week and then arrested after that. मतलब what do you think triggered it? I remember उससे शायद 2 महीने पहले से मतलब there were a lot of hateful speeches social media पे by prominent people. उसके बाद I also saw a lot of news channels especially getting in a lot of people from both the communities. कोई मौलाना है तो they talk against Hindu religion, and if it is people from the VHP या कोई और कोई नाम है तो they always talk about people from Muslim religion. तो I've been calling them out say for 2-3 months. बीच में ये हुआ कि there was this the BJP spokesperson Nupur Sharma. She'd gone to multiple other news channels, I think News 24 or I think even Republic, and then she had come to Times Now. She'd also spoken the same thing, exact same thing on multiple other 2 other channels, and she was stopped for saying that by the anchors. Important fact है कि ये उन्होंने वही दिन पे 2 और जगह बोला था. हाँ, 2 जगह वही दिन बोला था, and she was stopped. इस चीज में she was not stopped by the anchor, which is what I also tweeted. जुबैर का ट्वीट ये था कि आपने ये रोका क्यों नहीं? Which is a very very valid question. What is the point of having all of this being discussed on a news channel? And I think that is a very very valid question. Then she made a video saying this is completely false. I've never said this. ये truncated video है. कुछ अगर मुझे हुआ तो it is like Zubair who is responsible, and completely misinformation है. They were मतलब social media पे ट्रेंड करने लगा मैं. वन इज लाइक वी स्टैंड विद नूपुर एंड अरेस्ट जुबैर का 3-4 दिन चला, नेशनल वाइड नंबर 1 ट्रेंडिंग पे था, एंड वो पुलिस को भी प्रेशर था
कि we have to do something शायद. Obviously they would have gotten the complete video from Times Now. ये उसमें कुछ मतलब it is not edited, it is not clipped, कुछ मतलब out of context नहीं है. तो they could not go after me for that particular video. So what they did was एक और ऑलरेडी मेरे पे केस था इन 2022, मतलब एक फैक्ट चेक के नीचे किसी ने मुझे अब्यूज किया था. तो मतलब दैट पर्सन हैड द फोटो ऑफ हिज डॉटर और ग्रैंड डॉटर, आई थिंक डॉटर. तो ही अब्यूज मी ऑन मतलब ट्विटर. मैंने उसके रिस्पॉन्स में जो डीपी था फोटो लिया और बच्ची का जो फोटो था ब्लर किया एंड उसके रिस्पॉन्स में लिखा कि मतलब आप मतलब मुझे गाली दे रहे हो माँ बहन की, तो एटलीस्ट अपना जो डीपी है वो तो हटा दो, क्योंकि अपनी बच्ची का फोटो लगा के तुम मुझे गाली दे रहे हो. तब मुझ पे 2 FIRs हुई फॉर दैट पर्टिकुलर ट्वीट आस्किंग हिम नॉट टू अब्यूज मी बाय ब्लरिंग द फोटो ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड. तो जब मतलब 2022 में ये हुआ था तब क्लीन चिट मुझे दिल्ली पुलिस, आई हैड टू कम टू दिल्ली पुलिस एंड देन वो मुझे क्लीन चिट मिल गई थी. अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये केस पे बुलाए हैं, इसका तो क्लीन चिट मिली क्या, क्यों आया आप, मतलब दैट इज़ हाउ दे रिएक्ट, द पुलिस रिएक्टेड. अच्छा, तो आ ही गए हैं तो आई थिंक देयर इज़ वन मोर FIR अगेंस्ट यू, जो आपने कोई 2018 में एक पोस्ट की थी ट्विटर पे. आई रिमेंबर देयर वाज लाइक इन 2018 या कुछ, वो बजरंग दल वाले बहुत सारे दे यूज्ड टू गो टू पार्क स्पेशली इन अहमदाबाद, वहाँ जाके लाइक दे यूज्ड टू बीट अप कपल्स स्पेशली Feb 14 को वैलेंटाइंस डे के दिन. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा कि देखिए एक फोटो थी जो एक होटल थी जिसका नाम था हनीमून होटल. इट्स ए मूवी क्लिप. उसमें बाद में थोड़ी देर के बाद वो मूवी क्लिप में ही वो दिखाता है कि ये हनीमून होटल था, बाद में हनुमान हो गया. तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में था. एंड देन तो उन्होंने मेरा करंट फ़ोन लिया, उसमें कुछ मिला नहीं उनको. देन थोड़ी देर बाद आके कहते हैं कि मतलब यू बीन अरेस्टेड. मैंने कहा अरेस्टेड क्यों? मैंने कहा नहीं ऐसे ही, मतलब यू आर नॉट कोऑपरेटिंग. तो कॉपरेशन की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जो वो पूछ रहे थे मैं बोल ही रहा था. एंड प्रतीक वाज लाइक वेटिंग, क्या हुआ? मैंने कहा अरेस्ट हो गया हूँ. So-called fact checker, Vadra Congress favorite called Mohd Zubair has been arrested by the Delhi police for promoting enmity. सबसे पहले सवाल पुलिस स्टेशन में जब सवाल जब ये हुआ कि मतलब आपको मतलब कहाँ, वेयर हैव यू ऑल बीन, मतलब हैव यू बीन टू दुबई, सऊदी, मतलब ये जो मुस्लिम मेजॉरिटी मतलब कंट्रीज हैं वहाँ पे, मतलब व्हेन दे सॉ हैव बीन टू जापान, हैव बीन टू साउथ अफ्रीका, हैव बीन टू मतलब यूरोपियन कंट्रीज, बट यहाँ सब गया है और यहाँ पे गया ही नहीं. मतलब दे वर एक्चुअली शॉक, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थीरीज बहुत तेरी चल रही थी कि ये देखिए ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम बांग्लादेश, ये दुबई गया है, इनको फंडिंग यहाँ से आती है, सोरोस से पैसे आते हैं. ये सब बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थियरीज थी जो पुलिस वर टेकिंग इट एंड अकॉर्डिंगली देव मतलब वो अपने सवाल जवाब भी वैसे ही थे. ट्विटर ट्रोल पुलिस इन्वेस्टिगेशन चला रहा है. मुझे याद है किसी ने पूछा कि हमें पता चला कि आपको सोरोस से फंडिंग आती है. मैंने कहा आप ये ट्विटर पे देखें ये सब. तो ही एक्चुअली स्माइल्ड. हाँ नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा था. दे वर ऑल्सो टेकन अबैक. उनको लग रहा था कि ऑल्ट न्यूज़ और टीम चल रही है, बहुत सारे मुस्लिम्स हैं. तो उन्होंने दे स्टार्टेड आस्किंग मी कि कौन कौन है अपने ऑर्गेनाइजेशन में. मतलब दे वर एक्चुअली शॉक, मतलब 2 ही मुस्लिम हैं, मतलब इंक्लूडिंग यू 3 मुस्लिम. हो ही नहीं सकता यार, मतलब तुम्हारा पूरा लोग बोलते हैं कि मतलब ये है पूरा मतलब कंप्लीटली एंटी गवर्नमेंट डालते हो. मैंने कहा एंटी गवर्नमेंट कहाँ है? जो भी फैक्ट चेक है आप देखिए, मतलब फैक्ट चेक एंटी गवर्नमेंट या फैक्ट एंटी गवर्नमेंट है. तो ऐसे समय में अर्नब बहुत बहुत जरूरत है एक ऐसी पत्रकारिता की जो साहस की पत्रकारिता हो, एक ऐसी पत्रकारिता की जो सत्यमेव जयते की पत्रकारिता हो. एक फ्री प्रेस का सवाल है, एक अभिव्यक्ति की आजादी का सवाल है जो कुछ ली नहीं जा सकती. ये शी जिनपिंग का चीन नहीं बनाया जा सकता. We've spoken a lot about fact checking, but one thing I want to ask you, what do you guys think is like the biggest threat to media freedom? There are many threats to media freedom, but I think the biggest threat is that the government feels threatened by the media, by independent media especially, by YouTubers, etc., trying to curb them. And that has a ripple effect on everything. So for example, IPSMF is not getting as much money as it used to. So because people who have money don't want to put money into independent media. I don't think there is any independent media which has not faced some legal problem, where police, especially the ones in Delhi, where police have not walked in and taken away their devices and things like that. We saw what happened with NewsClick. So people are not willing to support us. Anyone who has even slightly deep pockets doesn't want to touch alt news. So the people who are actually running or who are actually funding alt news are the people who have minimal salaries, and they are taking 500 rupees from their pocket, and that is what is running alt news. So one also has to realize what is the reality of
who's supporting independent journalism in India. It is not the rich people. Yeah. It is the middle class which is supporting, or lower. Job goers. They are supporting independent journalism. They take money from Soros-linked organizations. They take money from American capitalists with pronounced political views. They toe that line. They take money from the Chinese, and then they want to lecture us. The primary issue is that the government feels threatened by independent media. Government has controlled every pillar of the information ecosystem. OTT, you don't see anything that is critical. Mainstream media, we know, is controlled. Godi media now. Godi media, right? At this point of time, the constant strategy by the government is any data that is critical of them. For example, COVID death card data recently got published. Everything is false. Everything is false. Any data that is critical is based on agenda-driven journalism. That no data which is critical is true. Any data that is praiseworthy is good. There are a lot of other journalists, ground reporters especially, who are doing very good journalism. It's just that their stories are not covered as much. मतलब क्योंकि they are associated with say multiple other, for example, India Today के भी हैं, Times Now के हैं. They are all very good journalists. उनकी स्टोरी बहुत अच्छी हैं, मतलब दे डू कवर. आई मीन दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स. व्हाट हैपेंस, दे गिव द स्टोरी टू अस बिकॉज उनका पेपर कवर नहीं कर रहा है. तो मतलब दे वांट दिस टू गेट एम्पलीफाइड. सो दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड आस्क देम टू ठीक है आप थोड़ा एम्पलीफाई कीजिए, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ट्वीट कीजिए बिकॉज इट्स ऑल बीन ये. तो वैसा भी है. बट प्रॉब्लम इज फॉर एग्जाम्पल इन यूपी है या और बिहार में है, they don't have many other options. Limited है options. एक मतलब if you are thrown out from one organization, they don't have many other points like कहीं और जाके easily मिल सके. Yeah, I don't think the problem is dearth of good journalists. The problem is the platforms. The problem is the news organizations. And they have the power of multiplication, right? So for example, if one channel, if one organization says कि war रुकवा दी, everyone is saying war रुकवा दी. So at that point of time, people believed कि war रुकवा दी, and this is the case with everything. How do you figure out what information to believe and what not to believe? And one common parameter that people say is that oh, so many people are saying it, it must be true. आप लोग बहुत प्रेशर में रहते हैं. ये एक इकोसिस्टम ने इतना प्रेशर बना दिया है और आप लोग बुज़दिल की तरह डरे हुए हो, उनके एजेंडा सेट के लिए सवाल लेके घूम रहे हो. आपको बुरा लगेगा, मैं सच कहता हूँ, आप सब लोग दबाव में जी रहे हो कि आपको भी उनके दबाव में, उनकी भाषा में सवाल पूछने पड़ते हैं और उसके कारण देश के लिए जो जरूरी सवाल होते हैं वो आपके भी छूट जाते हैं. एक इकोसिस्टम ने आप लोगों को डरा करके रखा हुआ है. इकोसिस्टम ने इतना दबाव पैदा कर दिया है कि आपको भी उसी लाइन पे जीना पड़ता है. तो मैं तो चिंतित हूँ कि देश के मीडिया को भी न्यूट्रल रहना कितना मुश्किल हो जाएगा और या तो उनकी भाषा बोलो या तो घर चले जाओ. Bro, didn't even hesitate. But it's very difficult, especially for you. कितना मतलब आइडेंटिटी को लेके ही लोग बोलते रहते हैं. हाँ कुछ भी है तो मतलब they somehow try to bring my religion, my name. इसीलिए भी मतलब as initially when you started off, why it was important for people to be anonymous. मतलब जब भी आर्टिकल देखते हैं we'll see it by that lens. अच्छा मैंने धक्का मारा था इसको कि no, you can't be anonymous. हाँ मतलब initially thought कि I should not have, but then now I realized कि that was a very good decision. Initially I did not also want to be on Twitter. तो ठीक है. तो वो बैलेंस करना मुश्किल है यार, डिफिकल्ट हो तो. मैंने बहुत धक्का मारा इधर उधर इधर. नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट को बुलाना होगा, मैं दिल्ली पुलिस ही भेजूंगा. सर बुलाओ, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है. And someone who's been an inspiration for you throughout this journey has been your mom. Not just an inspiration, she's who's you know, she's the managing director of the organization, and she ensures that all our finances are up to date. You know that there's, I mean, of course, she and I have a lot of fights about this, and he's witness to that. But she ensures that every account is okay, everything is good. And keeps pushing us also back, if we are not making some financially prudent decisions. And also like when I was arrested, it was her, obviously Pratik was involved too, but it was her who actually got involved and got in touch with a lot of locals there because she was also from an activist background. It was easier for her to get in touch with people there, surety के लिए हो या lawyer के लिए हो या मतलब
एक दिन में, मतलब it's not that easy. मतलब अगर if it was not for him and his mother, it would never, I would not have been out so soon. It's basically decades of goodwill. That basically Definitely, gets yes, you. exactly. Decades and decades of work go to their selflessness, and that's what I think your organization is made of. Also, it's amazing what you guys have achieved. Thank you so much for taking 5 years. But to be very honest, thank you so much for coming on the podcast. This has been a very fun shoot for me. Thank you. Thank you so Thanks. much. Alt News is starting a 30-day campaign to find 3,000 patrons who can give us 500 rupees every month for the next 12 months. Can we count on you to be one of them? To become an Alt News patron, click on the accompanying link or scan the QR code. Support independent journalism, support Alt News. Thank you very much. सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते. Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, chupna. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal. We do provide a lot of, artillery of fake news to world issues like London riots, Israel, Palestine. For me, I'll call a spade a spade. I think it's hate, Muslim hate. Muslim hate. In the last 2-3 years, there's a larger global right-wing solidarity that has formed. So, for example, Op India is interviewing some hate monger in UK and some hate monger in US, and somebody from there is retweeting Op India. So, there a larger global right-wing solidarity has also been formed. यहाँ पे है हमारे सब नेतन्याहू के चेतन्याहू. यहाँ लॉजिक के बदले में सोल्जर मिलता है, वो गोरे जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है. यही देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया कैमोफ्लेज फेस है. देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं. सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. चरण स्पर्श और नमस्कार.